सो अब मैं तुमको नई ट्रिक बताता हूँ, ये वाले फॉर्मूलेस कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, सो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा गिव मी अ सेकंड। सो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो सर आप रोज रोज नए फॉर्मूलेस बता देते हो, इतने फॉर्मूलेस तो याद नहीं हो पाएंगे। सो देखो क्या कर सकते हो, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? आई डोंट नो, शांतनु। It was something like log mod 226. साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो वापस देखो यहाँ पे ऐसा ही टर्म बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म बन रहा है। अब तुमको डिफरेंशिएशन याद नहीं है तो ये फॉर्मूला ऐसे याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एक्चुअली द ट्रिक इज साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये उस फॉर्म का डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द थिंग। द सेकंड थिंग इज, एक हमने ये पढ़ा था 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस वन। तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? गाइस ये तो याद कर लो यार प्लीज। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो अगेन ये वाला डिनोमिनेटर देखो, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रिजेंबल्स टू 1 ओवर ए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो इसलिए द इंटीग्रेशन इज 1 ओवर tan इनवर्स एक्स बाय ए। नेक्स्ट अप वी हैव 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो देखो अब डिफरेंस कितना सा है फॉर्मूला में, पहले था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एस। तो हमको फॉर्मूला बहुत बहुत अच्छे से लगाना है, बहुत अच्छे से मतलब बहुत वाइजली लगाना है। केवल इतना सा डिफरेंस है कि पहले यहाँ ए आ रहा है और यहाँ पे अब एक्स आ रहा है। सो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होता है एलन मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं, ये तुम्हें याद करना ही पड़ेगा बाय हार्ट। ओके, इन दोनों के लिए तुमको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए मैं ए की प्रॉपर्टी रिकॉल करता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ए माइनस बी ए प्लस बी। मैं मानता हूँ ए बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, सो ए हमेशा पॉजिटिव के साथ आएगा ऊपर, सो इट विल बी ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स। सो 1/2 है एलन मॉड ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स। सिमिलरली फॉर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर पीछे हो गया एक्स से, सो पहले माइनस की टर्म आएगी फिर प्लस की टर्म आएगी। सो 1/2 है एलन मॉड एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं इस पे बेस्ड। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, yeah, example 1. So it is integration of dx over 4 plus 9x square. So सबसे पहले तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कन्वर्ट करो, स्क्वायर्स बनाओ। 2 स्क्वायर और 3x the whole square. Exactly, so it will be dx divided by 2 the whole square plus 3x the whole square. ठीक है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? रेफर करो फॉर्मूला। 1 over x square plus a square. Where is it?
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस प्लस नहीं है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज सेम एज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आई गेस सो. It's 1 by a tan inverse x by a. एग्जैक्टली 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय a. ठीक है. सो a क्या है मेरा? a है 2. अब ये बात तुमको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए. a is 2, x is now 3x. ठीक है. सो इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? 1 बाय 2a, राइट? सॉरी 1 बाय a. सो 1 बाय a इज 1 बाय 2 tan inverse x goes to 3x, x becomes 3x, and in the denominator we have 2. अब इसमें एक एरर है. व्हाट एरर? मैंने यहाँ 3x को x एज्यूम कर लिया. इज दैट राइट? मेरे को और कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना चाहिए क्या? नो वेट 3 को डिफरेंशिएशन में क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है. इंटीग्रेशन में क्या करता है? डिवाइड कर डिवाइड करता है. सो टाइम्स 3 से तुमको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि वी हैव 3x ओवर हियर. और इसका लॉजिक अगर नहीं समझ आता है तो क्या करो? लेट 3x इज इक्वल टू t, जो हमने अप्रोच पढ़ी है. सो 3 times dx will be equal to dt. That means dx is equal to dt by 3. So ये क्या हो जाएगा? It will be like dx will be replaced by dt by 3. So 1 by 3 integral dt divided by 2 the whole square plus t whole square. अब बन गया पूरा x square plus a square वाले फॉर्म में. तो मैं अब डायरेक्टली लिख सकता हूँ 1 by 3 times 1 by 2 tan inverse x by a, सॉरी tan inverse t by a. अब t मैंने इंट्रोड्यूस किया है क्वेश्चन में, so I'll put t as 3x. So it'll be like 1 by 3 times 1 by 2 tan inverse 3x by 2. अब this is the way how you represent your answer in your school exams. ठीक है. अब MCQ में आया है तो तुम ऐसे कर सकते हो कि क्योंकि हमने 3x को कन्वर्ट लाइक 3x को वी आर कंसिडरिंग एज सम वेरिएबल और x, सो क्योंकि एमसीक्यू नहीं आने वाला मोस्ट डेफिनेटली. ओके, सो तो फिर यही वाला अप्रोच तुमको फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है. बट यू शुड इवन नो दिस अप्रोच. मान लो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारे स्टेप्स तो लिखोगे नहीं, सो डिवाइड कर देना 3 से क्योंकि यहाँ 3x का टर्म. चलो, should I move on? Okay. Example 2 is integration dx divided by x square minus 81. Can we try and solve this and then we discuss? You have to solve this. I'm not solving this. We'll discuss after that.
I got the answer. Okay. Okay, 1 one by second. 18. Let's wait. Shantanu and Ansh, are you confused for Got it. this? Got I it. got Okay, Ansh. Still doing it. Still doing it. Let's wait for 1 more minute. And you can utilize that 1 minute to like learn the formulas. Yes, Ansh. Acha, are you able to figure out which formula we have to use over here, Ansh? Yeah, dx by x square minus a square, which is equal to 1 by 2a log x minus a by x plus a mod x minus a by x plus a. Finally, Dhriti has learned the formulas. Nice, nice. Yeah. So yeah, I can write this as integration dx divided by x square minus 9 the whole square. So since it is of the form x square minus a square, I can write this as 1 by 2a. So my a becomes 9. So it will be 1 by 2 times 9 ln mod x minus a, right? So x minus 9 divided by x plus 9 plus c. Yeah, I got the same answer. Shantanu? Yes, sir, the same answer. अच्छा ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन. अब ये जिसने सॉल्व कर दिया ना उसका, let's see who is able to solve this. I mean, just tell me कि how are you like trying to solve this? So it's integral dx divided by x square plus 4x. So we did 4x plus 3 as a, I think. The middle term. You will take 4x plus 3 as a. How will that help? We split the middle term of the denominator. चलो कर दो, split कर दो उसके बाद. I mean, से वो लेके कुछ फायदा नहीं होगा. No, okay. X square 4x plus 3 को quadratic equation के form में solve करके I guess you get those two different You are trying x to plus make a, some. हाँ, you are trying to make a perfect square. Quadratic तो already है. Try to make a perfect Yeah, I'm trying to make a perfect square. Yeah. Okay. Perfect square and a constant. Oh, so it is right? Okay. अभी केवल ये ट्राई करो, x square plus 4x plus 3 को how can you make into a perfect square plus some constant. It'll be x plus 2 the whole square minus 1. X plus 2 the whole square minus 1. अच्छा, how did you get this key? It will be x plus 2 the whole square. School में सिखाया था. I mean, you just divide the middle term by 2, so that forms the square, and then you form the equation. So it will be x square plus 4x plus 4, and you already have a 3. So to get that 3, you subtract 1. चलो ठीक है, एक बार मैं भी समझा देता हूँ जिसको नहीं समझ आया था स्कूल में. सो करना क्या होता है, a प्लस बी, देखो x स्क्वायर और x का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है. दैट मीन्स हमारी जो आइडेंटिटी लग रही होगी दैट विल बी a प्लस बी दी होल स्क्वायर.
So a plus b the whole square क्या होता है कि it will be equal to a square plus 2ab plus b square, right? So we have x square, that means a will be x. Next we have x वाला term. So x वाला term कब आएगा? 2ab वाले केस में. So it will be 2 times x times a. So basically तुमको क्या करना है, जो मिडिल टर्म है 4x को उसको डिवाइड करना है 2 से. 4x को डिवाइड कर दो 2 से, you will get 2x. और जस्ट टेक द कोफिशिएंट ऑफ दिस, ठीक है? 4 को डिवाइड कर दो 2 से, जो भी कोफिशिएंट आया दैट इज द वैल्यू ऑफ b. सो इसको हम लिख सकते हैं x square plus 4x. Since a is 2, I'll make a whole square of 2, so I'll add that will be 4. Since I'm adding, I have to subtract the same thing, so 3 minus 4. Now these three terms can be written as x plus 2 the whole square minus 1. And then we take x plus 2 as x and 1 as a, and then you apply the formula dx by x square minus a square. Right. So guys, from the next class, I guess Dhriti will take over integration. No. You can teach, I can answer, that's it. Okay, and which formula, guys? The first one, 1 by 2a log mod x minus a upon x plus a plus c. Okay, so what is x over here? X plus 2. अच्छा, अब ये मत बोल देना कि x को हमने x plus 2 ले लिया. बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, x plus 2 को एक दूसरे वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करेंगे t से, and that t, like if you differentiate x plus 2 with respect to x, you get 0. Sorry, you get 1. हाँ, नहीं, x का differentiation is 1. 1. हाँ, so 1 dx is equal to dt. So ये बहुत easily replace हो जाता है, ठीक है? तो एक बार मैं और उस अप्रोच से करके बताता हूँ, ताकि तुमको जब तुम आंसर शीट में आंसर लिख रहे हो दिक्कत नहीं आए. सो x plus 2 is equal to t. दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करा, dx will be equal to dt. ठीक है? सो दिस विल बी लाइक dt डिवाइडेड बाय x plus 2 को मैंने t लिया था, t का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. तो इसका फॉर्मूला मुझे याद है, it will be 1 by 2a, since a is 1, so 1 by 2 ln mod x minus a. So here my x is t, so it will be t minus 1 divided by t plus 1. Now just substitute t as x plus 2, that's it. Now it's x plus 2 minus 1, तो वो x minus x plus 1 हो जाएगा ना. We can do that, right? Yes, you can do that. तुम्हें कोई नहीं रोक सकता वो calculation. So half log x plus 1 mod x plus 1 by x plus 3 plus c. Answer. Perfect, nice. Yeah, I can do integrals. Nothing is more. Pretty easy. Integrals तो क्या है sir, very easy topic. Actually, I won't agree to that. I won't even not agree to that. No, it's actually easy, but अभी थोड़ा easy इसलिए क्योंकि हम लोग particular type के अंदर काम कर रहे हैं, right? You'll get a question, like you'll study 4-5 different types, and you'll get a question. You have to figure out which type it is. So उसको पहले उस form में convert करना and then doing it is a bit tricky thing. But again, if you do practice properly, everything becomes easy. Yes, Ansh, any doubts for example 3? No. No? Okay, let's move on. So, yeah. Example 4. We have a integral of dx 1 dx square root of 2x square plus 3x minus 2.
हमेशा x का कोफिशिएंट 1 रखने का ट्राई करना, ठीक है? Again the same way thing, form a perfect square and then Right. root में वो x square part आता है. Correct. The thing we are learning currently is how to make a perfect square. So वो चीज अच्छे से बना लो. So, Yes. can you show how to make a perfect square? I don't get it. Okay, perfect square for example 4 only or for the previous examples? For this one. Okay. See, I have 2x square plus 3x minus 2. What I said is I always want the coefficient of x as 1. Okay. So I'll take 2 as a common factor and I'll be left with x square plus 3 by 2x minus 1. Okay. Now I'll figure out a perfect square for x square plus 3 by 2x minus 1. What I said is I go to the x ka coefficient. What is x ka coefficient over here? It's 3 by 2. Right? What I do is I make half of it. So half of x ka coefficient. So it will be 3 by 4. Then I write everything in terms of the like a plus b का होल स्क्वायर. अच्छा, अब ये कैसे पता चला सर a plus b का होल स्क्वायर है? क्योंकि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, राइट? अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव होता दैट मींस विल हैव अ x minus a का होल स्क्वायर. So it will be like x का होल स्क्वायर plus 2 times half of x का कोफिशिएंट. So 2 times 3 by 4 times x. So ये हो गया 2 times a times b. So b की value is 3 by 4 now. So I add 3 by 4 the whole square, and since I am adding, I have to subtract the same thing in order to maintain the equality. So इसके आगे था -1, and since I am adding 3 by 4 the whole square, I have to subtract the same thing. So 3 by 4 the whole square gets subtracted from this, and this particular terms, like these 3 terms, become a whole square of Shantanu. Okay, sorry, you're asking. Yeah. Shantanu. Yes. See, this is A, this is A, sorry, this is B, this is A again, this is B. So A plus B का whole square बन रहा है ना? So it's x plus 3 by 4. Exactly, x plus 3 by 4 the whole square minus
So solve this 1 minus 9 by 16. Seven by 16. Not 7 by 16. It's minus again. So 25 by 16. Minus 16 minus 9 is minus 25. I think you made a mistake somewhere because I'm getting 25 by 8 and I rechecked 2 times. No, I've not made a mistake. See, 4 ka square is 16 as per my square table. It's not 4 times Yeah, 2, it's 4 the whole square. 2 times x squared plus 2 into 3 by 4 into x plus 3 by 4 the whole square. So, am I correct or am I correct? Yeah, you're correct. Okay, yeah, because I got 25 by 8, I was stuck. Now I got the answer. I will get Yeah. the answer. One second. So, see, even if you have 25 by 8, so 28 का कुछ ना कुछ whole square तो होगा ही ना, 2 root 2 हो जाएगा. मान लो, in any case, not for this particular question. Yeah, I would still get the answer wrong, no? वो हाँ हाँ बीच में वो अटक रहा था. It was not proper. अच्छा, and which formula we are going to use? The x dt by x root of x square minus a square, which is equal to log x mod of x plus root of x square minus a square plus c. Nice. Yeah, I got the answer. Log mod x plus 3 by 4 plus root of x plus 3 by 4 the whole square minus a, what is a? 5 by 4 the whole square plus c. Perfect. Nice. So, like, okay. Waiting for Shantanu and Ansh now. And you can utilize every 1 minute for the formulas. That. Yes, Shantanu? I did it. You did it? Okay. I'll write the final answer. Just recheck once. So it will be like Alan. Okay, 1 second. Yeah. Alan mod x plus 3 by 4 plus square root of x square minus a square, right? So x plus 3 by 4 the whole square minus 5 by 4 the whole square. There's still an error in the final answer. मैंने यहाँ 2 कॉमन लिया था, वो 2 कहाँ गया? वो 2 log के बाहर आएगा.
नहीं 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 नहीं, अपन ने तो उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर केवल इस टर्म का लिखा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x माइनस 1 का। हमने इस क्वेश्चन के बाद हम सीधा इस स्टेप पे चले गए, तो ये 2 का तो हमने कुछ किया ही नहीं है। देखो हमने 2 कॉमन निकाला था इस टर्म्स में से, इन टर्म्स में से, राइट। Yeah, that I got. I इसके don't know ऊपर एक what स्क्वायर where रूट to भी put है, that to. so can I write this as 1 over square root of 2 integral dx. I'm taking out a constant from the integral and I'll be left with square root of x square plus 3/2x minus 1. Yeah, so it'll be 1 by root 2 log the entire thing. Exactly. So the thing is you have to make a note of all the constants which you are taking out. So take it out from the integral as well, and like it should be present in your final answer. Okay. Chalo, let's move on. So the next question is example 5. So it's integral dx divided by 5 minus 8x minus x square, and this is from boards 2017. So अगर ये क्वेश्चन तुमने सही कर दिया मतलब 2017 का एक क्वेश्चन तुम्हारा सही होता पक्का सही। I got the perfect square, but जो A part है वो कोई square नहीं form होगा. Okay. What about you, Shantanu and Ansh? I think 21 आ रहा होगा constant. क्या? 21 आ रहा है a square हाँ, वाले का. 21. So I took -1 outside common में, and so I got x plus 4 the whole square minus 21. Okay. इससे बेटर हम ये भी कर सकते हैं ना, हम माइनस कॉमन ले लेंगे. I mean हम लोग ये भी कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन dx 5 minus 8x plus x square. अब इसका एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की और ट्राई करते हैं rather than taking out a minus, because हमारे पास एक फॉर्मूला a square minus x square के लिए भी है ना. Are you getting what I'm trying to say? X square minus a square भी है, but we still have a square minus x square. So why we have to do that मेहनत कि हम पहले माइनस बाहर निकालें and वो सब करें.
अच्छा एक चीज मुझे बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने इंटीग्रेशन सॉल्व करा, तुम्हारा आंसर कुछ और आया और बुक के पीछे कुछ और आंसर, मतलब फाइनल आंसर वाज समथिंग एल्स? Yeah, once or twice. But I'm pretty sure my answer was wrong then. नो। अब ये क्वेश्चन मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ. I can, like one method which you told, I can take 1 minus common from the denominator and I'll be left with x square plus 8x minus 5, right? चलो एक बार Yeah. दोनों मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं फाइनल आंसर क्या आता है. I'm solving with my method right now. Just give me 2 minutes. Okay. Can I take root 21 the whole square as a? Yeah, that's right. Okay, that is the way I have to do it. Yep. I got the answer. Okay, tell me. 1 by 2 root 21 log root 21 plus 4 plus x upon root 21 minus 4 minus x mod plus c. Okay. Try solving using this way also. I solved it that way, the one you This say. way.
Then where did this Yeah, minus by go? minus I took root. I did a square minus x square. I took minus back in the. That's the same thing, no? It becomes that in this form. मैं बोल रहा हूँ take हाँ this ये minus one फर्स्ट फॉर्म में outside हो only. जाता है. Yeah, take this Okay. minus one outside only and solve with this particular denominator. Okay. Yes, Shantanu and Ansh. So I can't solve it. So where are you stuck at? Make it perfect square. Perfect square. कैसे ट्राई कर रहे हो perfect square बनाना? So Sorry, but I did like a mixture of both of these methods together actually. I made the perfect square first by removing the minus one outside, and then I put Then the you again minus one multiply back. times. नहीं. Yeah. चलो भूल जाओ ये -1 है ही नहीं. ठीक है? उसके बिना सॉल्व करो. Yes, शांतनु. परफेक्ट स्क्वायर बनाने में क्या डिफिकल्टी आ रही है? देखो x स्क्वायर प्लस 8x है. राइट, वी हैव x स्क्वायर प्लस 8x. सो हम लोग को क्या करना है? वी नीड x स्क्वायर. हम लोग ने x का कोफिशिएंट देखा क्योंकि वो पॉजिटिव था. दैट मींस इट विल बी अगेन a प्लस b की होल स्क्वायर. So I'll divide the x का coefficient by 2 and what I get is I get 4. So I can write 8x as 2 times 4x, 2 times 4 times x, right? You have 4, so you add 4 the whole square, so that's 16. Or rather write this as 4 whole square only. So plus 4 whole square and minus 4 whole square. ठीक है, because we are adding 4 whole square, so हमको equality maintain करने के लिए वो चीज subtract करनी पड़ेगी. Okay, so this can be written as dx divided by 5 minus x square plus 8x. What are we writing it as? So अच्छा मुझे एक चीज बताओ शांतनु, can we write the first three terms as x plus 4 the whole square? yes. And we have also minus 4 whole square, right? So I am writing 8x plus x whole square as x plus 4 whole square minus 4 whole square. Sorry, whole square. Yeah,
So 5 minus x plus 4 the whole square minus 4 whole square, like this. Okay. So इसको further कैसे लिख सकते हैं? Integration dx. I'll simplify, like I'll open the brackets with this negative sign. I'll be left with 5 minus x plus 4 the whole square plus 4 whole square. So it will further solve out to integration dx. 5 plus 16 is 21 minus x plus 4 the whole square. Okay. So अब वापस Yes, a sir. square minus x square बनाओ. Yes. So I was stuck on the part before. I got till 5 minus x plus 4 square minus 4 square. You got the still part. Okay. After this you were confused. Yes. So I got it. Okay. Acha, you got it now. We have to like simplify, make all the constants at one place and all the variables at one place. Yes, Triti, did you solve by removing this minus sign? Yeah, I'm still getting the same answer. Isn't that like कि ये root 21 ऊपर आ रहा है? 221 minus 4 minus x वाला term ऊपर आ रहा है log के. Oh yeah, I made that mistake. Okay. Yeah, okay. Got it. So So your then answer if, will. I mean, the question is the same, there are two different methods we can use. Why are the answers different then? This is because this is integration. Okay, so Wow, yeah, what an answer! Wow. I'll tell you. I have logical answers for everything. So it is like you'll get the final answer as minus, because we ignored the minus. I've put the minus over here. So you'll get this as square root of 21 minus 4 minus x. Okay. And Upon square root 21 plus 4 plus x plus, yeah. अच्छा, मैं बाकी सबको भी बता देता हूँ क्या चल रहा है. सबसे पहले हमने इस मेथड से सॉल्व करा एंड वी गॉट द फाइनल आंसर एज दिस पर्टिकुलर आंसर. ओके. मैंने दूसरे बार में क्या बोला कि माइनस कॉमन ले लो एंड उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करो. सो उससे आंसर में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो रूट 21 डिनोमिनेटर में था, इस आंसर में वो ऊपर आ गया एंड एक माइनस साइन बाहर आ गया. सो धृति ये पूछ रही है कि क्वेश्चन 1 है और आंसर 2 कैसे पॉसिबल है. सो तुम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या? एक्चुअली ये दोनों आंसर्स सेम है. ये दोनों आंसर्स सेम है. तुमको बस एक को दूसरे में चेंज Yeah, करना because है. minus इसमें माइनस ऊपर है और इसमें माइनस बाहर है ही नहीं. Yeah, I got. हाँ, सो ये माइनस अंदर चला जाएगा. एक्चुअली एक प्रॉपर्टी होती है a log b कैन बी रिटन एज log b टू द पावर a. ये पढ़ा है तुमने? सो ये जो माइनस 1 है ना, BBA के प्रेपरेशन में. हाँ, सो ये जो -1 है ये अंदर चला जाएगा एंड इट विल बिकम पावर ऑफ दिस. सो इसका -1 करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा एंड इट विल बी द सेम आंसर. सो मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो मेथड है और जो मान लो बुक ने मेथड फॉलो करा है, उन दोनों में आंसर्स अलग अलग आए. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कन्वर्ट योर फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ दैट आंसर. ठीक है. आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी मेथड सॉल्व कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर हम लोग को आंसर्स कभी कभी मैच कराने होते हैं बुक के पीछे से. सो इसलिए वी हैव टू कन्वर्ट वन पर्टिकुलर आंसर इनटू सेकंड आंसर. ये दोनों आंसर सेम है. Cool, no problem in this. Okay, nice. इसी में एक और वैरायटी है. सो एक नोट बना के लिख लो. लेट्स से अगर कोई एक ऐसा इंटीग्रेशन आया px प्लस q dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c.
तो सर हमें वो सॉल्व करना तो आ गया जब नीचे ax स्क्वायर प्लस सॉरी bx होगा, x स्क्वायर नहीं होगा। सर हमें वो सॉल्व करना आ गया कि नीचे आप कुछ भी डिनोमिनेटर दे दो, उस पे स्क्वायर रूट लगा दो या बिना पावर के दे दो, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बट अब तो आपने न्यूमरेटर भी दे दिया, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? नो आइडिया। So what we try to do is we try to write this numerator like px plus q as lambda times, that is some constant times differentiation of the denominator. Plus a constant, let's say it's mu. So हम लोग क्या कर रहे हैं, px plus q को we are writing as some constant times the differentiation of denominator plus mu. तो सर इससे क्या फायदा होगा? आपने बोल दिया, हम ऐसे कैसे मान लें? So जैसा मैंने कहा, I have proper reasoning for every question. So px plus q को मैंने कैसे बोला, lambda times differentiation of denominator. Differentiation को let's say मैं d लिख देता हूँ, plus a constant mu, ठीक है? And in the denominator I have again ax square plus bx plus c. I'll try to separate the numerator with the denominator. So I can write this as lambda times differentiation dx divided by square root of ax square plus bx plus c plus mu times dx square root of ax square plus bx plus c. सर अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा? So देखो, मैंने बहुत अच्छी ट्रिक क्या कर दी है, लैम्डा टाइम्स इसको डिफरेंशिएशन लिख दिया, तो अब मैं इसको टी मान सकता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को। अगर मैं इसको टी मानूंगा तो ऊपर मेरे पास डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। चलो रादर एक बार लेट्स डू इट इन अ क्वेश्चन फॉर्म ऑफ इट। एक बार इसका एक क्वेश्चन करते हैं, उससे ज्यादा बेटर समझ आएगा। So the question is integral x plus 2 divided by 2x square plus 6x plus 5. Okay. मैं तुम्हारे साथ साथ ही सॉल्व करता हूँ। I'm trying to write the numerator x plus 2 as lambda times differentiation of denominator. What is differentiation of denominator? What is differentiation of denominator, guys? इस टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4x plus 6. Nice. So lambda times 4x plus 6 and a constant, let's say mu. Okay. अब lambda और mu की वैल्यू कैसे निकालें? So एक काम करते हैं, x plus 2 it will be 4 times lambda x plus 6 lambda plus mu. ठीक है, x का कोफिशिएंट मैच होना चाहिए। So 4 lambda will be equal to 1. ये x के आगे कुछ नहीं है तो इसका कोफिशिएंट होगा 1, तो लैम्डा क्या आ जाएगा 1/4। ये समझ आ रहा है या सब कुछ ऊपर से जा रहा है? चलो ठीक है, 6 लैम्डा प्लस म्यू क्या होगा, 2 होगा, राइट? So how did you get 4 lambda equal to 1? 4 लैम्डा इक्वल टू 1। देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 4 लैम्डा, एंड राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1। So we are basically comparing both sides of the equation. ठीक है, जो x का कोफिशिएंट इधर है वही सेम x का कोफिशिएंट इधर होना चाहिए। So 6 times lambda will be 6 times 1/4 plus mu is equal to 2. So mu will be equal to 2 minus 3/2, right? So mu कितना आ जाएगा, 4 minus 3/2, it will be 1/2. lambda और mu की वैल्यू आ गई। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं मेरा जो न्यूमरेटर है x plus 2 उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ
1 by 4 times 4x plus 6 plus mu is what? 1 by 2 divided by 2x square plus 6x plus 5, and you like write dx as this. ओके लिखो मत गाइस, एक बार सब देख लो, पहले प्रोसेस समझो उसके बाद लिख लेना, ठीक है? I'll now separate the terms. I can write this as 1 by 4 4x plus 6 divided by 2x square plus 6x plus 5 dx plus 1 by 2 integral dx divided by 2x square plus 6x plus 5. यहां तक किसको समझ आया? यहां तक कोई डाउट है ये वाले स्टेप पे? No, sir. I think I'm understanding. शांतनु and Ansh? Yes, sir, I understand. परफेक्ट. तो अब मैंने क्या कर लिया है कि इस चीज का जो डिफरेंशिएशन है वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, सो इसका इंटीग्रेशन मैं इजीली कर लूंगा. मैं इसको t मान लूंगा, ऊपर डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है तो इजीली इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा. और इसका डिफरेंशिएशन अभी हमने करना सीखा परफेक्ट स्क्वायर बना के. Are you guys getting what I'm trying to say? एक साइड Yeah. हाँ, सो दोनों डिफरेंशिएशन अब सॉर्टेड है ना. एक साइड में हमको केवल वो नीचे वाले को t सब्स्टिट्यूट करके ऊपर वाला डिफरेंशिएशन में चला जाएगा. सेकेंड केस में we'll make a perfect square and we'll solve the difference, like we'll solve the integration. पहला वाला क्यों डिफरेंशिएशन में चला जाएगा? देखो 2x plus 6x का डिफरेंस, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करो एक बार. Take 2x square plus 6x plus 5 as t. Right. What do you get after differentiating both sides? 4x plus 6 is equal to dx by dt. So 4x plus 6 times dx is equal to dt. Yeah. So 4x plus dx Okay, इसमें okay. चला हाँ जाएगा ठीक है dt में. ठीक है. हाँ ठीक. तो ये हो गई ना एक ट्रिक कि न्यूमरेटर को ऐसा हाँ. लिखा लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन प्लस अ कांस्टेंट. सो इनको दो इंटीग्रल्स में हमने ब्रेक कर दिया, हम दोनों इंटीग्रल्स हमें पता है कैसे कैलकुलेट करना है. Yeah. Got it. ओके. No, just give 2 minutes. I need to write it down. या Yeah, I'm done. you have calculated the final answer. No, I finished writing this much. I'm calculating the final. Okay, now calculate the final answer.
I think the answer is 1 by 4 log mod 2x square plus 6x plus 5 plus half tan inverse 2x plus 3 plus c. Inverse 2x plus 3. What is a? You have missed a. The formula is 1 by a tan inverse x by a. Acha, a is 1, I guess. Yeah. Okay, and what about, like, did you divide the, you have 2x plus 3. So 2x plus 3 का differentiation denominator में multiply करना पड़ेगा ना? By 2. Yeah, so it will be 1 by 4 for the second term. Yeah. Yeah. 1 by 4 tan inverse 2x plus 3, right? Yes. Yes. Cool. So इसका differentiation, इसका integration करोगे, you'll get 1 by 4 log mod 2x square plus 6x plus 5 plus, again this will be 1 by 4 tan inverse 2x plus 3. Are you sure it will be 2x plus 3? No. How did you make a perfect square? But it will not be 2x plus 3. I did something wrong. Yes, first take out a common factor of 2. I said coefficient of x या तो 1 होना चाहिए minus 1 होना चाहिए. Right? So हाँ. 2 बाहर निकाल लो पहले and उसके बाद perfect square बनाने का try करो. Yes, Anshan Shantanu. Guys, कैमरा पे आ जाओ जो लोग आ सकते हो, because ऐसे पढ़ाने में मजा नहीं आता है. Yes, Anshan Shantanu.
हेलो 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 शांतनु, अंश, धृति, क्या चल रहा है यार? इतना टाइम क्यों लग रहा है? सॉल्विंग अटक रहा है कहीं पे, इट्स नॉट कमिंग. फर्स्ट इंटीग्रल इज सॉर्टेड, लॉग वो वाला तो हो गया ना? हाँ, फर्स्ट इंटीग्रल इज सॉर्टेड. प्रॉपर आंसर आ गया. तो तुमसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है सेकंड वाले में। देखो हाँ, सेकंड 2x, इंटीग्रल का ये नहीं बनता. मैंने पहले एक 2 कॉमन ले लिया और मेरे पास क्या बचेगा अंदर? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2. एक्स स्क्वायर प्लस 3 या 5/2. So can I write this as x plus 3/2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 5/2 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर? या तो इसको सॉल्व कर so लो you ना। get 1/4 integral 1 by x plus 3/2 the whole square plus half the One whole second, square. let me calculate the constant term. It will be 5/2 minus 9/4. So it will be like 1/4. Okay. So it becomes 1/2 the whole square. So it will be 2 times x plus 3/2 the whole square minus Plus 1 by, okay, plus 1/2. My bad. plus Yeah. 1/2 the whole square. Yeah. So it becomes 1/4. A is what? 1/2 tan inverse x plus 3/2 Plus 3/2 upon by 1/2 plus 1/2. t. So यही है फाइनल आंसर. Yeah. I don't know why I got stuck. Sorry. शांतनु और अंश, तुम लोग कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करने वाले हो क्या? ऐसा सोच के आए हो कि मैथ्स में कितना भी सर पूछ ले? सर आपने बोला था ना सो जाओगे तो बता देना. अभी वो लोग सो गए, बताएंगे कैसे? बता नहीं रहे क्या? अब इनको कैसे पता चलेगा कि सो गए हैं? अब उठाएं कैसे इनको? शांतनु यार, तुम थोड़ा सा अपना माइक फिक्स कर लो या फिर आई डोंट नो, बहुत मुश्किल है मुझे सुनने में. Okay, so the next question is x plus 2 integration of x square minus 1 and this is dx. वापस से क्या करना है? न्यूमरेटर को लिखना है लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन प्लस अ कांस्टेंट.
This will be half 2x plus 2 upon root x minus 1 dx. So like x plus 2 can be written as half of 2x plus 2, right? Yeah. तो देखो उसके बाद इंटीग्रेशन इजी हो जाता है क्या? टर्म सेपरेट कर लेना. हाँ. मम्मी हमने first part of the integration I'm getting as root of x square minus 1 plus c. Root of 2x by root x square minus 1 का integration. हाँ, so वो क्या आ रहा है? root x square minus 1 plus c. x square minus 1 plus c. ओके, ठीक है. प्लस सी आखिरी में लगा देना जब दोनों इंटीग्रल्स कैलकुलेट होते हैं, उसके लिए कॉमन कांस्टेंट.
Yes guys, second part of the integral. Shantanu, Ansh, क्या कर रहे हो यार? I'm doing it. Second integral is 2 log mod x plus root x square minus 1 plus c. And then I'm adding the 2 ones. यही आ रहा है क्या फाइनल आंसर? अंश, शांतनु, It is root x square minus 1 plus 2 log mod x square plus root x square minus 1 plus c. why mod x square? Mod x plus root x square minus 1. Right. Okay. So, चलो ठीक है. समझ आया? जब भी ऊपर न्यूमरेटर होगा तो विल राइट लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन प्लस म्यू. ओके. So whole of the 7.4 is based on this particular concept कि अगर न्यूमरेटर आ रहा है तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो हमने जो नॉर्मल फॉर्मूलेस पढ़े हैं उसमें कन्वर्ट करके लिखेंगे. ठीक है? I mean these types of questions. Okay. Let's do one last question for this particular concept. We'll take a 5 minutes break after that and then we'll switch to some other concept. Okay, so the last question for this is integration cos x dx divided by 4 sine square x plus 3 sine x plus 10. And one more, you can do this as your homework. It's integration one by x 6 ln square x plus The 7. last is 4 sine square x plus 3 sine x plus 10, right? Yeah, plus 10. In the second question, can you say what is in the bracket? So it's integral dx by x 6 ln square, that means log square x plus 7 log x plus 2. Don't go on calculating the final answer first. Tell me what are you thinking for the particular question ki kaise I'll proceed. Tell me that.
Yeah, I have written the answer question. You have written the question. Okay, try solving them. Did you say the homework? I thought the I homework. said the second one is homework. The first one you have to solve right now. Yes, guys. How will you solve the first one? We take sin x as t, so cos x dx is equal to dt. So we get dt by 4t square plus 3t plus 10. Nice. And then you like again apply that whole square wala thing because it reduces to that particular concept. Sorry, what? In the denominator, you again try to make a perfect square so that yeah, you reduce it to the formulas which we have, right? That's all. Yeah. Okay. Try to get the final answer and we'll wrap it up for this concept and we'll move to some other thing.
I am not able to make a perfect square. Can you help me out there? So we took like sin x as t and this cos x dx goes in dt, right? So I'll like, Yeah, so it's 4t square plus 3t plus 10 okay. denominator. So dt dt by 4t square plus 3t plus 10. I want the yeah. coefficient of t square to be 1. So I take 1 by 4 So as a common factor so t square plus 3 by 4 plus 3 by 4t plus 5 by plus 2. 10 by 4. So that 5 by 2. reduces to 5 by 2. Okay. So I'll write this as 1 by 4 integral dt t plus 3 by 8 the whole square plus Yeah. 5 by 2 minus 3 by 8 the whole square. Yeah, okay. No, I want to know where were you confused at? 3 by 4 I forgot to divide the 1 by 2 part. Usme Okay. Ansh, are you literally speaking? Sorry, sleeping or what? Hello, Ansh. ये सो गया पक्का सर. एक बार धृति प्लीज कॉल अंश. Hello. Yes, Ansh. Yeah. Man, were you sleeping or actually doing the questions? No, my mom had just called me to बाहर गया था 2 मिनट के लिए. Okay. It So just are you came back. able to solve all of the questions जो हमने पीछे करे और जो अभी हम कर रहे हैं? कर रहे हैं ये मैं स्टार्ट किया था बट पिछले वाले हाँ. ओके, वो समझ आया न्यूमरेटर को कैसे चेंज करते हैं? हाँ. ओके, नाइस. ओके, आई गेस इसके बाद सॉल्व करना इज वेरी इजी, राइट? इसके बाद तुम सॉल्व कर लोगे. सो यू वांट अ 5 minutes break? please I want to eat food. I'm hungry. ठीक है, so we'll meet at like it's 4:16. We'll meet at 4:20 or 25. Tell me. Whatever you say, I'm fine with it. I just need food. Okay, so it's 4:17 now. Let's meet at 4:22. 5 minutes. Okay. Bye bye. Yeah. So अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं integration by doing partial fractions, like using partial fractions. So have you heard the term before? What are partial fractions? स्कूल में तुम लोगों ने पढ़ा है partial fractions? हाँ किया है. क्या होता है partial fraction? वो मुझे नहीं पता बट किया है और अभी किया है. अभी किया है पर अभी नहीं पता, तो ये तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी ऐसा. मतलब no as in I know we have done it. I just don't know what it was. Okay. So partial fraction is basically when the degree of denominator is greater than the degree of numerator. So write type 3 and here you can like type 4, I guess. We have already done till type 3. Not really sure. Okay, so type 4 and we are doing it by partial fractions. So the first need of partial fractions is you need the degree of numerator to be less than
degree of denominator. Okay. Degree of numerator has to be less than degree of denominator. So let's say I have a fraction like 1 over x plus 1 times x plus 2. तो ये एक पार्शियल फ्रैक्शन है या नहीं है? And of course this is degree of x. Degree of x in numerator has to be greater than, like less than degree of x in denominator. So 1 over x times x plus 2, is this a partial fraction or not? It's not. It's not a partial Actually, fraction. no, it is. It is because ऊपर तो 0 है x का degree. Right. So it's a partial fraction. So अब इसको हम कैसे लिखते हैं? Individually we separate the denominators. So we can write this as a over x plus 1 plus b over x plus 2. ठीक है? We tend to write in this way कि 1 over x plus 1 times x plus 2 को हम लिखेंगे a over x plus 1 plus b over x plus 2. All right. तो a और b की वैल्यू कैसे निकालनी है वो हम सीखेंगे, बट अभी एज ऑफ नाउ तुमको ये समझ आना चाहिए कि इसको हम कैसे लिख रहे हैं. I'll show you one more table. So अगर numerator is of the form px plus q divided by x minus a times x minus b, so again you write the partial fraction as a over x minus a plus b over x minus b. ठीक है? अगर अब okay, so basically if we have, let's say 2x plus 3 divided by 8x plus 7 the whole square. ठीक है? So again ये partial fraction है या नहीं है? है. So इसको हम कैसे लिखेंगे? अब होल स्क्वायर आ गया तो हमको दो टर्म्स बनानी पड़ेगी. एक बार जब एक नॉर्मल वाला टर्म ले लेंगे 8x plus 7 and plus we'll add whole square also. 8x plus 7 the whole square. ठीक है? तो सेकंड प्रॉपर्टी यही लिखी हुई है कि अगर px plus q divided by x minus a का होल स्क्वायर होगा तो हम एक पहले बिना स्क्वायर वाली टर्म को डिनोमिनेटर में रखेंगे और एक बार स्क्वायर वाली टर्म को डिनोमिनेटर में रखेंगे. ओके, नीचे अगर 3 टर्म्स आ रही हैं तो 3 बार लिख देंगे. यस धृति? This is applicable for x plus a also. Yeah, all x plus a minus a सबके लिए applicable. ओके, सो हाँ, थर्ड वाला पॉइंट भी आई गेस क्लियर हो जाना चाहिए बिकॉज x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c 3 टर्म्स है तो हमको 3 बार लिखना पड़ेगा. राइट? अब एक बहुत सही चीज है. सो वी हैव लेट्स से 2x square plus 5x plus c and let's say you have x plus 1 the whole square and you have x plus 2 let's say. ठीक है? सो x plus 2 के लिए मैंने एक टर्म बना दी a over x plus 2. राइट? अब मैंने क्या बोला, जब भी होल स्क्वायर होगा तो हम दो टर्म्स लिखेंगे. एक जो ओरिजिनल टर्म है, एक बिना होल स्क्वायर बिना पावर के साथ, और एक टर्म विद पावर के साथ. राइट? सो आई राइट दिस एज b over x plus 1 and I'll write one more term which is c over x plus 1 the whole square. Are you getting this? जब होल स्क्वायर होगा तो दो टर्म्स आएंगे, बिना पावर के और विद पावर. ओके, Yes, sir. cool. सो या ये हमारा फोर्थ पार्ट है. अच्छा, अब एक और पार्ट बचा है केवल. लेट्स से कुछ टर्म ऐसी है 2x square plus 3x plus 4. You have x minus a
times let's say x square plus 5x plus 2. अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे? सो x माइनस ए को तो हम एज इट इज लिख देंगे a ओवर x माइनस ए, राइट? अब देखो, अब ये करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 आ रहा है, नीचे x की कुछ पावर और कुछ एक एक्सपेंशन लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है. सो आई विल राइट द न्यूमरेटर एज bx प्लस c डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2. जब एक एक्सपेंशन लिखा हुआ है तो हमको bx प्लस c लिखना पड़ेगा. ओके, सारे बात समझ आए? I think. चलो ठीक है, एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, मुझे बताना उसको कैसे हम break कर एक सकते हैं. second, can you just show that white page? 1 second. This page. हाँ ये लिख लो सारा, बेटर. हाँ, again this x square plus bx plus c cannot be factorized. ठीक है, वैसे this is a NCERT like table, NCERT में है पूरा ये टेबल, फिर भी नोट्स के लिए लिख लो. Yep, done. Alright. Awesome. You are on mute. I'm so sorry. So I'll give you some questions and just tell me how will we write the partial fractions. I mean, how will we like write the individual terms for them. So the first question is, say, okay, 7x minus 4 divided by x plus 2 times x minus 3 the whole square. Tell me इसके different वो क्या होंगे? How will you expand this? So for the first one, I think yeah, for the first, where is it? For the first one, it will be a by x plus 2 and b by x minus 3 and c by x minus 3 the whole square. Nice. Okay, go for the second one. देखो पावर हम उसकी टर्म्स तब तक लिखते जाएंगे जब तक पावर -1 नहीं हो जाता, और सॉरी पावर +1 नहीं हो जाता. I mean जितनी पावर है उतनी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी उसकी. Okay. Same way with 2x plus 5 will be the second one will be a by x minus 1, b by x minus 2, c by x minus 2 the whole square and d by x minus 2 the whole cube. Nice. All right. Cool. So ये समझ आ गया तो पार्शियल फ्रैक्शंस पूरा समझ आ जाएगा. ओके, एक लास्ट पार्ट ट्राई करते हैं. So the last part is, okay, 1 over x square plus 4 the whole square times x minus 8. It'll be a by
square plus 4 b by x No, square no, 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 plus no, no. See. I said जब भी नीचे कोई एक्सपेंशन हो तो हमको ऊपर वाली टर्म्स कैसे लिखनी पड़ती है, bx plus c फॉर्म में. अगर yeah लीनियर bx फंक्शन है then okay it's fine. right. So bx plus c by x square plus 4 bx plus c by x square plus 4 the whole square. Constants will change. It will be dx plus e divided by x plus 4 the whole square and a by x by this 8. all right. समझ आए सारे जो तीनों हमने लिखे? कुछ याद करने जैसा नहीं है इसमें, बस पावर, जितनी पावर ऑफ टर्म्स है उतना हमको जाना पड़ता है. ओके, अब देखते हैं पावर पार्शियल फ्रैक्शन से हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. राइट एग्जांपल नंबर 1. Okay, so the question is integration dx x plus 1 times x plus 2. So इसके पार्शियल फ्रैक्शंस हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a over x plus 1 plus b over x plus 2, right? Yeah. So क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 is equal to a times x plus 2 plus b times x plus 1. कैसे लिखा मैंने? Cross multiply. Basically taking LCM of these terms and x plus 1 x plus 2 cancel हो जाएगा, ऊपर केवल 1 था. So 1 is equals to a times x plus 2 plus b times x plus 1. So अब या तो तुम x की कुछ कुछ वैल्यूज डाल दो. देखो, या तो हम ये कर सकते हैं कि कोफिशिएंट्स ऑफ x कंपेयर कर लें. So कोफिशिएंट्स ऑफ x ऑन द राइट हैंड साइड क्या होंगे? a plus b times x plus 2a plus b will be the constant, right? So दो इक्वेशंस बन गई. x का कोफिशिएंट इधर a plus b है, इस साइड पे 0 है, लेफ्ट हैंड साइड पे. ये स्टेप से ये स्टेप समझ आया? पहले तो x के कोफिशिएंट्स थे, उनको कॉमन ले लिया, ठीक है. सो आई कैन राइट a plus b will be equal to 0 and 2a plus b will be equal to 1. A plus b is equal to 0 and 2. So you will solve these two equations and you will get value of a and b. So this is method 1 for calculating. एक second. A plus b, how is that equal to 0? 1 by x 0 थोड़ी होता है. 1 by x कहाँ पे है? यहाँ पे केवल 1 है. x का कोफिशिएंट क्या होगा? 0 ही तो होगा अगर x का कोई टर्म ही नहीं है तो. हाँ. ओके हाँ ठीक है. और क्या कर सकते हो? मैं सीधा x की वैल्यूज ही डाल देता हूँ. मैं इस इक्वेशन में बोलता हूँ अगर x इक्वल टू -2 है तो बताओ भाई वैल्यू कैसे निकालोगे? तो हम ये लिख देंगे 1 इज इक्वल टू a टाइम्स x -2. सो -2 plus 2 is 0. So 0 times a plus b times -2 plus 1 which becomes -1. So यहाँ से सीधा ही b की वैल्यू आ जाती है -1. Are you getting? मैंने x को ऐसा डाला कि a एलिमिनेट हो जाए एंड b की हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल जाए. Yes sir, got it. Similarly, what I can do is I can put x as -1 and get the value of a because यहाँ से b eliminate हो जाएगा. So 1 will be equal to a times 1 plus b times 0. So 1 is equal to a and you get like a as 1. So a is equal to 1 and b is equal to -1. So I prefer कि तुम ये वाला method follow करो because this is easy. Put the values of x and you will get the values of a and b easily. ठीक है. So I can write this whole term, one like integration of this as 1 over, because a is 1, so I can write this as 1 over x plus 1 plus minus, sorry. So since b is -1, I can write this as -1 over x plus 2. So -1 over x plus 2, and it's a dx over here, it's again a dx over here, and you just have to calculate the integration of this, which is super easy.
क्या होगा इन दोनों का इंटीग्रेशन? वन बाय एक्स प्लस 1 by x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x, तो x plus 1 में क्या होगा? log x plus x, log x plus 1 plus x क्यों? अरे हाँ सॉरी, एंड दैट विल माइनस log x plus 2, सॉरी बेसिकली तुम x plus 1 को t ले रहे हो और उसके बाद ये आंसर आएगा। या ठीक है, पूरा प्रोसेस समझ आया? कैसे हम a की वैल्यू निकाल रहे हैं, कैसे b की वैल्यू निकाल रहे हैं, उसके बाद ये इंटीग्रल्स इतने इजी हो जाते हैं कि हमको केवल आई मीन 1 by x का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, एक बार नोट डाउन कर लो, कोई भी प्रोसेस में दिक्कत आई मीन कोई भी स्टेप में अगर दिक्कत है तो पूछ लो। एंड लेट्स लाइक आफ्टर दिस लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So यस शांतनु, I didn't understand the concept in the first equation. फर्स्ट इक्वेशन इन द सेंस which step? But everything. Let me understand the concept. Did you understand how did we write a over x plus 1 plus b over x plus 2? Oh, yes, but after that, Okay, so I took the LCM of the like this particular thing, so I can write this as a times x plus 2 plus b times x plus 1. Right inside में LCM लो terms का, I mean yes, ठीक है, and इस साइड पे क्या है, न्यूमरेटर पे केवल 1 है। yes. So 1 is equal to a times x plus 2 plus b times x plus 1, ये इक्वेशन समझ आई? उसके बाद क्या हुआ? ओके, उस नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, यहाँ तक समझ आया तुमको? हाँ आया। ओके, देन आई पुट x एज -2, मेरे को x की ऐसी वैल्यूज रखनी है कि मुझे a और b की वैल्यूज मिल जाए। ओके, सो देन आई पुट x एज -2, so I put x as -2 and I get the value of b, so I get b as -1. Okay, I put x as -1 and I get the value of a, which is +1. Try substituting x as -2 and x as -1 and like tell me, you'll obviously get the values of a and b. I just have one question. Why are we taking x as -2 and -1? Okay, see, these are the roots of this equation. अगर मैं x को -2 रखूंगा तो this part will become 0, right? Right. So I'll only have to like I'll directly get the value of b. That is why अगर मैं x को 3 भी रख सकता हूँ तो you'll get two equations in a and b then. But मैं ऐसा एक स्टेप बचा के मैं ये करना चाह रहा हूँ कि directly I get the values of a and b. Okay. So how did you get the equation after that? 0x plus 1 equal to a plus 2 x plus 2 plus b. Forget this now. If you are putting the values of x, this equation makes no sense. Where we were only doing this in order to calculate the value of a and b. So we are just putting the values of x as -2 and -1 so that our equation forming becomes easy. Finding the values of a and b Exactly. becomes Right. easy Easier. because it becomes 0. Right. Right.
Done, sir. Okay. I'll give you one question. Try it on your own and okay. Try this question now. सबसे पहले break it into like the different terms which we have and then find the values of the different variables.
I separated the terms like a by x minus 1 plus b by x plus 2 upon c by, I mean, plus x, c by x plus x minus 4. Okay. Then I cross multiply all of them. Not cross multiply, you are taking the LCM. I'll tell you one second. इस स्टेप के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली इस चीज को, इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम लोग इस टर्म्स में लिखना चाह रहे हैं, राइट? So I take LCM of all of the terms and I like LCM अभी क्या होगा, x minus 1 x plus 2 x minus 4. Yeah. So the LCM will be x minus 1 x plus 2 x minus 4 and a के साथ अब क्या मल्टीप्लाई होगा, x plus 2 times x minus 4. Yeah. Similarly b के साथ मल्टीप्लाई होगा x minus 1 times x minus 4. and c के साथ it will be x minus 1 times x plus 2. Exactly. Now this is equal to the particular function which we have. So it is 2x plus 3 divided by x minus 1 times x plus 2 times x minus 4. Yeah, Okay. so 2x plus 3 is equal to the a, b, Right, c. exactly. The numerators are get equal. So 2x plus 3 is equal to a times x plus 2 times x minus 4 plus b times x minus 1 times x minus 4 plus c times x minus 1 times x plus 2. Okay. You have to now calculate the value of a, b and c. That's all. Okay. Okay, now if I have to calculate value of a. So ऐसा x ढूंढो, कोई एक ऐसी x की वैल्यू ढूंढो जिससे b and c 0 हो जाए simultaneously. Array, how is that possible? If So I x put की x वैल्यू as तो 1, अलग अलग. क्यों? अगर मैं x को 1 रखूं तो देखो b भी 0 हो जाएगा, c भी 0 हो जाएगा. हाँ, you just have to multiply it, right? हाँ, yeah. किसी एक भी टर्म को if you put like if you make one of the term as 0, since they are in multiplication, वो पूरा टर्म 0 हो जाएगा. Yes. One second. हाँ, and maybe there is a case जहाँ पे तीनों टर्म्स या दोनों टर्म्स एक साथ 0 नहीं हो रहे, तो तुम कोई भी रैंडम x की वैल्यू पुट करके इक्वेशंस बना के abc की वैल्यू निकालो. Okay. Simultaneously. Like either of the two are not becoming 0 at the same time, so you have to put random value of x and like get a equation in abc, and उसके बाद तुमको तीन equations बनानी पड़ेगी by putting three different values of x. Yeah, and you have to solve those three equations to calculate a, b and c. I'm getting a as 11. No, a is not 11. We'll have to put x as 1 in order to get a, no? Yeah, so 2x plus 3, where x So I put put a, x. so 5. Okay. 5 is equal to a, and then x is 1. So, oh, x is 1. 3. 3 14. 14. A is 14. Yeah. If I put x as 1 over here, I'll get a times 3 and Into minus minus 3. 3. So a will be minus 5 by 9 according to me.
where you are getting 14 from? 3 3s are 9. Or 3 3s is 14. No, 6 is a 9. Yes, शांतनु and Ansh, are you getting कि हम लोग कैसे निकाल रहे हैं एबीसी की वैल्यूज? शांतनु अभी थोड़ा क्लियर हुआ? Yes, sir. चलो, नाइस. Minus 1 by 18 is B, I think. Okay, B is minus 1 by 18, correct? Sorry, your voice broken. Is wrong. No, I didn't hear it properly. Your voice like broke in between. 11 by 18. 11 by 18, perfect. So the function reduces to like a times a divided by x minus 1, b divided by x plus 2, and c divided by x plus 4. So you have the values of a, b, and c. Just like integrate all of those functions and tell me the final answer. वैसे इसमें तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं. अगर abc आ गया, you can directly tell me the integral just by looking at the. Minus 5 by 9 log x minus 1. Okay. Minus 1 by 18 log x plus 2 and 11 by 18 x minus 4. Very easy. Yeah. Partial fractions is very easy. Okay, cool. Yes, Shantanu and Ansh, any doubt? No. Okay, Shantanu. No, sir. Okay, nice. Okay. Let's do this question. Sorry, it's x minus 8. X square plus 4 times x minus 8. How do we integrate bx plus c wala portion? You are mute again. We'll figure that out. तुमको वो तो आता ही है कि अगर ऊपर x का टर्म हो तो हम कैसे करते हैं. जो नोट वाला पार्ट लिखा है था, लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस म्यू. थोड़ी कैलकुलेशन
करनी पड़ेगी उसमें. नहीं समझ आया? नहीं, I don't know what you're talking about. नोट Okay. वाला पार्ट क्या लिखा था वो पता है, but what you're talking about I don't know. So we try to write the numerator as lambda times the differentiation plus mu, and उसके बाद तो तुम्हें solve करना आता ही है. अच्छा, तो bx plus c को I take something some mu times lambda times x square plus 4. Exactly. सर इतनी सारी मेहनत तो हमसे नहीं होगी. So after today's class, our homework will be 7.4 and 7.5. Okay. And कितनी exercises हैं integration में और? 10. 7.4, 5. So for the next class, it will be शायद 6, 7 and 8, 9, 10 हम एक साथ ही कर देंगे. ठीक है? So probably it will complete, like it will get complete by the next 2 weeks. Hope so. Application of derivatives is a small chapter. School finished in 45 minutes. School, so even Integral. application of it, yes, it's actually like if you know integrals, application of integrals is just application of it, like as the name Yeah. suggests, kind of that. So application of integrals is again a super easy chapter.
I don't know what to do. Okay, so we write this as a times like a over x minus 8 plus bx plus c divided X by, squared plus 4. okay, so can I write this as 1 is equal to a times x square plus 4 plus bx plus c times x minus 8? Yeah. After this, if I put x as 8, what will I get the value of a as? X is 8. So 64 plus 4. 1 by 68. 1 by 68. Okay. If I put like, अब देखो b और c को simultaneously 0 बनाएंगे, I mean अगर इस term को हम 0 बनाएंगे तो b and c will simultaneously get removed from the equation. So ये नहीं कर Yeah. सकते, right? We have to put, let's say I'll put random values. I'll put x as 0. So I get the equation as 1 is equal to 4 times a minus 8 times b minus 8 times c. Okay, sorry, my bad. It'll be minus 8 times c only. Right, minus 8 times c. So 1 is equal to 4 over 68 minus 8 times c. Right. So 8 times c is equal to 4 over 68 minus 1. And from here you can calculate 1 the value of second. c. Oh, 1 second, 1 second. How did you get 8C? I've put x as 0. So X is 0. So B becomes 0 plus C minus 8. So minus 8 times 1 c, that is second. what I've written. 0 plus 4. So this is 4A plus. This is 0. This is b 0. times 0 C becomes 0. minus. हाँ. ये हो गया 0. 0 plus c is what? C. So this C. term becomes c. Oh, multiplication है. Okay, okay. हाँ ठीक है. And on a similar basis, you can calculate the value of b. ये नेगेटिव में आ रहा है आंसर. So इसमें तो अब मैं हेल्प नहीं कर सकता. नेगेटिव आ रहा है तो आ रहा है. Negativity is bad for your health. So it's minus 64 upon 68 into 8. Into 8 और डिवाइड. धृति क्या हो गया है? बहुत ज्यादा अरे इंटीग्रेशन हो गया. 68, only 68 into 8, not the entire thing into 8. Okay, okay. So तुम I a b didn't c की वैल्यू, multiply. all right, you'll get the values of a b and c, and उसके बाद तो तुम easily इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो. मैं पूरा सॉल्व नहीं करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, because the values are a bit absurd, so होल स्क्वायर बनाने में टाइम लग जाएगा, राइट? Right. Okay, any doubts in this question? शांतनु and अंश. खाली धृति रिस्पॉन्ड करती है. No, sir. अंश. No, sir. Okay. चलो. Now we are going to discuss a very important question. So the question is integration of x cube plus 2x plus 5 divided by x plus 2 times x minus 1. Okay. And my question to you is like, is this a partial fraction or not?
I mean, I can we don't solve know. this with partial fraction? Acha, what is the first definition which I told ki when we can use partial fraction? We can only use when degree of numerator is less than degree of denominator, right? Yeah. So do we have But degree here of the degree numerator? of numerator is greater. Okay. So अब कैसे solve करें? So now we'll try to convert this in the partial side, like in the form ki degree of denominator becomes greater than degree of numerator. So उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग divide करेंगे. Okay. हम लोग जो as it is इसको लिखा हुआ है, we'll divide this as x cube plus 2x plus 5 is to be divided with x plus 2 times x plus x minus 1. Okay. Divide करना आता है सबको? सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को एक्सपैंड कर लेते हैं. We'll get x square minus x plus 2x minus 2. So it will become x square plus x minus 2, right? So this particular, like, our dividend becomes x square plus x minus 2. एक बार डिवाइड करके मुझे बताओ what is the quotient and what is the remainder? And considering that you know how to divide like algebraic expressions. Yeah, you take just multiply it by x first. No. Hold on. I don't remember how to divide algebraic expressions. I No, mean, no, I you knew have to. how to. I don't remember. Okay, so one sec, yeah. So basically, what we do is we first write like whole of the expression as in terms of descending powers of x. Okay, so x cube will come first, then x, and then like so and so forth in decreasing order of x, the power of x. Okay, same goes for the quotient as well. Then you divide x cube, the first thing, with the first part of the question. So x cube gets divided with x square. What are we left with? X. Right. So x comes in the numerator. I mean, like x comes as the question. So x is to be multiplied with this whole expression now. X times x square is what? X cube. X times x is what? X square. Yeah. Now, since there is no term of x square, can I write this as 0 plus x, 0 dot x square, and like the terms of x square will come as this? Like I can write beneath this. Okay. Yes. Then I have minus 2x. So this will be minus 2x, right? जहां जहां मैंने नीचे टर्म्स लिखी हैं वहां वहां मैं साइन चेंज कर दूंगा. So this plus becomes minus, this minus becomes plus, this plus becomes minus. Okay. X cube minus x cube turns 0. 2x plus 2x 2x, becomes, 2x. So remains 5. Oh no, 4x plus 5. and this x square वो तो कैंसिल हो जाएगा ना. कैसे 0 और यहाँ 0 है कोफिशिएंट, यहाँ 1 है, Oh. माइनस x square है. So 1x minus x square. अब वापस से मैं उसको अरेंज करूंगा डिसेंडिंग ऑर्डर में. सो आई गेट 4x plus 5 minus x square plus 4x plus 5, राइट. अब नेक्स्ट स्टेप तुम प्रोसीड करो जैसे मैंने बताया. वापस अभी अरे जब तक रिमाइंडर का पावर कम नहीं हो जाता है डिविडेंड से, तब तक हमको ऑब्वियसली डिवाइड करना पड़ेगा ना डिवाइजर से. दिस इज द डिविडेंड, दिस इज द डिवाइजर, दिस इज द क्वेश्चन. चलो So गाइस then here वापस से. I हाँ बोलो. now I can take 1 only. So can I take 1 plus 1? Plus 1 or minus 1? You divide minus x square with Minus 1. x. Minus 1. हाँ, so you Minus can take 1. minus 1, right? Yeah, so x square cancel. Minus x. 4 plus x. 5x plus 2 minus 2. 3. 5x plus 3. That will be the denominator, like that will be the remainder.
Yeah. So minus x square minus x, and this will be plus 2 plus minus, it becomes 5x minus 3, sorry 5x plus 3. Okay, perfect. So अब हमने वो एक थ्योरम पढ़ी थी, पता है, फर्स्ट नहीं थर्ड क्लास में आई गेस, कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. ये याद है क्या? Yeah. So if I divide whole of the equation with the quotient, what I get is dividend divided by quotient is equal to divisor plus remainder by quotient. पूरी इक्वेशन को क्वेश्चन से डिवाइड कर दिया, क्यू. ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा डिविडेंड था, एंड दिस इज आवर क्वेश्चन. Yeah. This is D and this is Q. This is div and this is Q. That's not the quotient. Sorry, that's the divisor. My bad. Yeah, correct. Okay. So if I divide whole of the equation by D, the dividend, I get quotient plus remainder by dividend. Yeah. So this is dividend and this is my D divisor. Okay. So dividend by divisor can be written as quotient. What is quotient? X minus 1 plus Yeah. remainder. Remainder is what? 5x plus 3 5x plus 3. divided by the divisor again, D, X plus which is 2x. x plus 2 times x minus 1. So हम लोग ने क्या किया, जो ये पूरा एक्सप्रेशन था, we are writing this expression as this now. Okay. Now first part of the expression is very simple to integrate. X minus 1 को integrate करना is very easy. It'll be x square by 2 minus x. Yeah. Right. And this part को we can integrate with partial fractions, because अब देखो, Yes. degree of denominator A by becomes x plus 2 and b by x minus 1 करके. Yeah. exactly. So the catch is कि हमने पूरे उस expression को change कर दिया in terms of like in the way कि we can use partial fractions now. Okay. So it's a very important question, and of course तुम थोड़ा division practice कर लेना ताकि सब sorted रहे. Okay, note down कर लो. I'm not solving after this because इसके बाद वाले steps हमको already आते हैं. So बस इसका integration करना पड़ेगा. I'll give one more question ताकि थोड़ा practice हो जाए और. Have you guys written this? Should I move to the next slide? 1 second. Done. Shantanu and Ansh, any doubts? No. Shantanu? No, sir. No. तुम लोगों को डाउट ही नहीं आता है, ये अच्छी चीज है वैसे. We are smart people. Or at least I like to think I'm smart. No, everyone is smart here. It's not like everyone has brain and everyone is smart. No, I'm not saying the other two guys aren't. But you know, sometimes जो खुद का होता है ना कि यार इससे कंपैरिजन में यार मैं बेवकूफ लगता हूँ.
वैसा I don't think like that about anyone. I'm smart and I'm going to Okay. remain smart all my life. वैसे. All right. So yeah, this is my example 5. And it's on the same concept key, since the degree of numerator is equal to degree of denominator, I'll try to change this in such a way so that I can use partial fractions. So मुझे केवल convert करके बता दो इसको, final integration नहीं करना है पूरा. I think it's a by x minus 2 plus b by x minus 3. Not this. Tell me I mean, like the final in it's the 5 sense. 5 times x minus 1, 5 bracket x minus 1 upon x minus 2 x minus 3. And there's no constant in the start. No, I'm not getting any constant. You're not getting 1 plus 5x minus 5 divided by. Yeah, I forgot the one. Um, so it's Yeah. x, that the one will get integrated. 1 plus Uh-huh. 5 Okay. times x minus 1 Okay. by I x. was just asking the expression. So like this can be written as 1 plus 5x minus 5, and you'll in the denominator you'll get x minus 2 times x minus 3, I guess. Yeah. Right? Okay, Shantanu and Ansh, any doubts कि ये कैसे आ रहा है? No, sir. Ansh? Hello Ansh, are you there?
ठीक है, इसके बाद तुम नॉर्मल इंटीग्रेशन कर सकते हो। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, उसके बाद तुमको यहाँ पार्शियल फ्रैक्शंस लगाने हैं एंड या इट ऑल बी सॉर्टेड आफ्टर दिस। ओके, सो लेट मी स्टॉप शेयरिंग नाउ। We done for today? No, we'll study 1 hour more. 1 hour? No, I can't. I have class at 7. I need a break, please. Okay. Yeah, so homework is 7.4 plus example still 7.4. After this you have 7.5. Again, example still 7.5. And yeah, well, very soon we'll try to like complete integration. So it was a big chapter. I hope अभी तक सबको समझ आ रहा है सब कुछ। प्रीति ने सब कॉपी वगैरह बंद कर दी है। क्यों भाई, हम पढ़ने वाले हैं अभी। और You have 4 minutes. What are we supposed to study yet? क्या बाकी क्या है और आज के लिए? अरे अभी बहुत बाकी है। अभी हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पूरा कर लेंगे। स्कूल ने 45 मिनट्स में किया, हम 4 मिनट्स में करेंगे। Yeah, it's not funny right now. And make sure सब लोग होमवर्क करके आए। अंश शांतनु, you people यार, you don't do homework properly. I mean, even Ansh did not do the last question of exercise 7.3. Well, do you guys submit your homework in that Google Forms which we have? No. Do we have to? I don't know. You do it for physics and chemistry or not? Not anymore. No. Start हुआ था तभी करते थे. अभी I don't. And we have 12 exercises. I mean, including the miscellaneous, we have 12. Let's figure out. I guess we'll need 3 more classes. We have our prelims on 21st February. So how will we complete? So our next class will be on 29th, 1, then 5, then 12. So till 12 we'll be completing integration, and we have to complete differentials and application of integrals too. So we'll need some extra classes, I guess. And you said your exams are from 21st, right? 21st. Okay. And check with Lasya ma'am. All right, guys, we still have 2 minutes. What should we do? Bye, sir.